Thank you everybody for patiently waiting. And with this, I extend my warm welcome to all of you to this fourth day of this 7-day faculty development program on a very vast topic, which is innovative practices in research, publishing, and patent filing for academic growth. And this program is being jointly organized by Rabindranath Tagore University, Bhopal, Guru Goraknath Ji Government College, Hisar, Vital Biotech, and Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota. So once again, on the behalf of organizers, I again extend a warm welcome to all of you. Thank you for being such a wonderful and attentive audience. So first of all, about the organizers. So organizers are like Rabindranath Tagore University. So this is the first university of Madhya Pradesh, private university, established in 2010, and is a skill-based institution of Central India. It was founded by renowned education and skill group AISECT. University is NAC accredited and has been offering program among the faculties of engineering, education, management, law, arts, science, commerce, agriculture, and medical sciences. It is well recognized by UGC and a member of AIU, ACU, and university. Institutes hold approval from bodies such as AICTE, NCTE, BCI, INC, and the Paramedical Council of Madhya Pradesh. So, with a strong emphasis on research, this university has established 17 centers of excellence in diverse domains, including incubation, startups, advanced material, IoT, innovation, environmental science, indigenous knowledge studies, etc. And University Center has contributed to over 1,500 research papers and 300 books authored by its faculties and scholars. So this university is undertaking research projects in collaboration with DRDO, NCTU Taiwan, IIT Delhi, and the Biodiversity Board of Government of Madhya Pradesh, and many more. And secondly, the Guru Goraknath Ji Government College, Hisar. So this is also a very reputed institution under the government of Haryana. Established in 1950, the college is accredited with B plus grade by NAC, and it is recognized by UGC, affiliated with Guru Jambeshwar University of Science and Technology. The college features spacious classrooms, advanced labs, and a two-story library with an e-resource center. It is committed to the holistic development of students and empowering them with knowledge, skills, and leadership qualities needed to thrive in and contribute into the society. And Vital Biotech is one of the India's premier research training and publication institute, and it is focused on addressing challenges in food and agriculture, actively engaged in the development of microbiological and biotechnological solutions, and is highly respected in both domestic and global scientific communities. The institution emphasizes publishing a progressive peer research review in high quality journals. And the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota. It serves as a bridge between the rural communities and stakeholders, such as the government, development organization, and corporates. It is a national level professional organization that provides a collaborative platform for agriculture professionals, educators, researchers, and students, both within India and abroad. So, with this, I once again like to congratulate the entire organizing team for bringing together this enriching experience. And now about today's session. So for today's session, we have esteemed speaker Dr. Manas Mathur ji. So Dr. Manas Mathur currently serving as an assistant professor at the School of Agriculture, Suresh Gyan Vihar University, Jaipur. His research expertise include medicinal plant biotechnology, nanotechnology, and phytochemistry. Sir has completed his PhD in botany from University of Rajasthan and has guided several PhD scholars and published high impact research papers. Sir has authored book chapters for globally recognized publishers such as Springer, Taylor and Francis, and etc., and hold patents in nanotechnology, and has received Best Academician Award and Outstanding Scientist Award in 2021 and 2022. Dr. Mathur actively contributes to academic growth through organizing conferences, supporting NAC and NIRF initiatives, and serving as a reviewer for many reputed international journals. So, sir, today we are truly honored to have you with us. And once again, I welcome you and we request you Thank to you, ma'am. kindly address and enlighten the audience with your valuable insights. So, over to you, sir. Thank you, ma'am. Very good evening, first of all, respected Jitendra sir and Himani ma'am. And thank you for providing me this opportunity to share things with the students. And let me ask, it is bilingual or totally I have to do in English?
Just let me Sir, know. bilingual will be okay. Bilingual will be okay. Fine, fine, fine. So thank you, sir, for providing me such kind of very good opportunity. And so should I start my topic for today? And Yes, sir. I Yes, sir. welcome. So a very good evening to all the audience here. So first of all, my Dr. Manos, as about myself, already by my suggested so many things, and sir knows me very well. So first of all, today I'll start with very important topic, that what do we mean by this word scientific ethics with respect to science and research. Along with that, I will also elaborate about intellectual honesty and research integrity. For example, I will start my talk. Sir, am I audible? Hello, sir, am I Yes, sir. audible? You're audible. Audible, sir. Audible. Okay. So first of all, I will quote one example that how should we go ahead. Suppose I am teaching in the university. Suppose there are three ways to earn the money. First way is to murder someone. Second way is to put the decade in the bank. And third one is to teach you and get the salary. Sir, I As would per like to interrupt you. Sir, I would like to interrupt you. Actually, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है और जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा आपका भी और स्लाइड्स मूव नहीं हो रही हैं. ओके अब हो गया नाउ आ गया यस सर, अब फुल स्क्रीन पे है. ओके तो द टॉपिक जस्ट ओके what is my ethics teach you and I will get this from the university. आपका क्या ethics होना चाहिए? सुनना, पढ़ना, examiner. Whenever you are going to help for research, you should first of all should have good ethics. It means what kind of things you have to follow and what kind of things you don't follow. After आपने बहुत जगह you are knowing very many things that many technologies are day by day going to innovate and develop. So during the research, no doubt we are doing very good research, but in spite of Sir, we are not able to hear you. I think there is अब आ रही some है मैम आप network issue with you. Just
हेलो हेलो जी मैम, सर, नाउ यू आर ऑडिबल सर। आप ठीक है मैम? हाँ, ऑडिबल सर। हाँ सर, आप समटाइम्स सर हो जाती थोड़ी प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज। एक्चुअली मैम थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो गया ना, थोड़ा सा बारिश वारिश जैसा चलिए, ओके। ओके एनीवे, ओके, नो प्रॉब्लम सर। so today's topic is about I was discussing scientific conduct ethics with respect to science research. मैंने सर आपको एक्चुअली जैसे थोड़ा बताया। नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो ऑफ करके सिर्फ बोलने का करेंगे तो भी शायद थोड़ा नेटवर्क उसमें सही हो जाएगा। अच्छा, एक यस सेकंड, ओके यस, मैम। ओके सर, ओके फाइन। Okay, so first of all, we should know what are the good ethics and what are the bad ethics. Whenever you are going to enroll yourself, what for the PhD, आप जब खुद को PhD के लिए enroll करेंगे, initially you should have inbuilt good ethics as well as bad ethics. आपको ये पता होना चाहिए, you should know what are your good things, what are your bad things. Unfortunately, आजकल क्या हो रहा है research के अंदर, no doubt many students, many people are doing good research, but day by day we are going to know that technology is advancing. Right now, today's scenario of AI and ML, mostly कई जगह ऐसा भी होता है कि papers are being published in very good journal, but later on it has been found that they have been copied, data has been copied, okay, some plagiarism has been done. तो इससे क्या होता है, later on paper are getting retracted. So initially, when you will going to enroll for yourself as a researcher, you should have good scientific conduct with respect to your honesty and integrity. Now, first of all, we should know about the word. What is research? Research का meaning क्या होता है? यहाँ पे एक word है RESEARCH. Research means everything is there in the world. सब कुछ वर्ल्ड में है. What you are going to find yourself as a novel thing, that thing which is already being searched, वो चीज जो already search हो चुकी है, in that what novelty, what new things you are given to that already happened thing is called as research. जो चीज already search करी हुई है उसके अंदर what input you have given as a novelty, that is called research. So what is the scientific definition of research? It is defined as an undertaking intended to extend your knowledge through a disciplined inquiry or systematic investigation. First, initially आप जब PhD के अंदर जाएंगे, what you have to do? You have to make your synopsis, what the kind of research you are going to do. You have to make your objectives, what kind of work you are going to do. You have to prepare your methodology, how you are going to do research, and finally, what is the importance of your research to the society. आपने जो भी अपना रिसर्च पे काम किया है, whatever things you have done in your PhD, how it is important for you, not just to get a job, not just to get the scientist, but how the society is benefited from your research. This is the best thing which comes out from the research. So you should always follow good ethics. I will discuss later on in this PhD what are the good ethics, what are the bad ethics. What is the next point? Your research methodology should be very systematic, very scientific approach. For example, आप में से कोई बोलता है कि मुझे चंद्रमा पे जाके घर बनाना है. So no doubt, this is your thinking, your research, but it is practically not possible. So your scientific thinking should have a rational approach. It is based on that reality that's going to happen. So systematic, methodological, scientific approach for basic facts around a certain problem in order to find solution is your research. You are going to decide a topic on which you are going to do the research, and that topic should be followed systematically. How will you fulfill the solution of the topic to the society? What novelty, what new things we are going to do. Now, next point is what very, very important, research on humans. Many background like from pharmacy, from MBBS, from biological background, in doing PhD, they work on certain animals. Okay, many things. For example, you are going to survey to take the data. आप किसी भी hospital में जाएंगे, if you will ask that give me the
medical or biochemical report of that person. They will not give you the data. So the systematic undertaking of activities which involve the collection of human data, measurement, biological samples are not related to the management of the health condition. For example, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर will not tell whether this patient is drink, this patient smoke, this patient is vegetarian, non-vegetarian. अगर आप में से कोई इस तरह का रिसर्च करता है, जो सर्वे का काम करता है, if your research is based on collection of human data, you are not, hospitals are not allowed to give the data. उसके लिए they have to take the permission from the ethical committee. एक कमिटी होती है ethical की, उससे परमिशन मिलेगा. Then the hospital will give you the exact data of certain patient. Whenever you are going for the operation, आप में से देखा होगा बहुत लोगों ने, डॉक्टर्स एक डॉक्यूमेंट पे साइन है. Document, what is written? If the patient died during the operation, we are not responsible. Okay, so this is their ethics. So ultimately, what I mean to say that your research should undertaking in such a way that should be properly methodological based. It should be proper in scientific manner, and it should be based on real facts. Okay, so see the next point. यहाँ पे कुछ points बने हुए हैं. How your research goes ahead. This is knowledge management cycle, KMC. This is called as knowledge management cycle. That generation. Generation means how you think your ideas. Okay, what is research? It is totally based on ideas only. आप क्या नया सोचने वाले हैं? What new things you are going to do? What kind of knowledge you are going to get? So this is generation of your ideas. Second is assessment. How you are going to carry your ideas towards your PhD. आपका PhD complete होगा when you prepared your synopsis, your objectives, your experimental work, publish the papers, attend the conference, submit the thesis, give the viva. That is your PhD. But during your journey, what ऐसा नहीं कि आपने PhD डिग्री के लिए आपको करना है, नौकरी के लिए करना है, या प्रमोशन के लिए करना है. No doubt, वो करना है. That you have to do. But what new learning you have learned, what ethics you have gained, what new things you have given to the society, यहाँ पे आपको खुद का assessment भी करना है, so that your knowledge is utilized. Third point क्या है? Generation, assessment, utilization. Utilization means use of research to for the welfare of the society. Fourth point है synthesis. Synthesis का मतलब है how you are going to build yourself as a good researcher. सबसे पहले क्या हुआ? जनरेशन, थिंकिंग ऑफ आइडियाज. नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? असेसमेंट. हाउ यू आर गोइंग टू असेस योरसेल्फ, हाउ यू आर प्लानिंग योरसेल्फ टू गेट योर डिग्री इन अ प्रॉपर मैनर. थर्ड इज यूटिलाइजेशन. इट मींस हाउ योर रिसर्च, योर डिग्री इज यूज्ड बाय सर्टेन आइदर पॉलिसी मेकर्स, सम साइंटिस्ट, सम लोकल पीपल, सम यूनिवर्सिटीज, सम स्टेक होल्डर्स, सम इंडस्ट्री. How your research is utilized and how you are going to synthesize yourself to make yourself as a good researcher. Last में क्या रहता है? Dissemination. This is very very serious point regarding the research. बहुत आजकल मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है? University asks, okay, get your paper published, get the degree. What you will do? Okay, I will pay the money, get the paper in the Scopus. आपको पता होगा आजकल स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस का जमाना है. बट यहाँ पे भी दे आर डूइंग सम बिजनेस थिंग्स, वेरी रॉन्ग एथिक्स. व्हाट दे आर डूइंग? दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अबाउट 30,000, 40,000. दे विल पब्लिश योर पेपर इन 2 days and 3 days. Ultimately what happened? The journal is out of the scopus. If you are going for the interview and you are saying that I have published my paper in the scopus, see my CV, what committee will tell you? Get out, this is nothing. So I request all of you, whenever you are going to publish your research paper in Scopus or Web of Science journal, you should be very very accurate about the journal in which you are going to publish your paper. If any journal is asking for the money, 20,000 रुपए दे दो, 25,000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए दे दो, क्या करेंगे? आपका पेपर हम 3 दिन में छाप देंगे. Will publish your paper in 3 days. As a researcher, initially आपके उनमें क्या आएगा? लालच आएगा. क्यों आएगा?
so that okay, I will publish my paper, I will get the degree, and I will get the promotion. But after 6 months or 1 year, what will happen? Your money will go waste, your paper will go waste. How? Their general will become out of the scopus. And आपका इंटरव्यू देने जाएंगे, एक्सपर्ट्स क्या बोलेंगे? ये पेपर आपने कहाँ करा दिया? जैसे फर्जी जनरल में करा दिया, तो कब का बाहर हो चुका है? What you will do? Nothing. So when you are attending any seminar, conference, going for the publication, you should be very, very, very serious about the journal in which you are going to publish your paper. ऐसे कोई भी journal नहीं है. There is no journal in the world from arts, commerce, science कि वो 2 दिन में आपका पेपर दे. If they are doing such kind of, it means they are not true journal. They are fake journal. आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सबका एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है. सो दे आर मेकिंग ओके सीरियस इशू. सो वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट आर द पॉइंट्स which makes you as a good research? आपकी रिसर्च को अच्छा कैसे बनाया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रॉब्लम शुड बी वेरी एक्यूरेट. जो भी आप टॉपिक सेट करें, इट शुड बी इनोवेटिव, रिलेवेंट, हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी. सेकेंड पॉइंट क्या है? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. उस प्रॉब्लम के अंदर व्हाट ऑब्जेक्टिव्स यू आर टू फॉलो. आप उसमें अपने 50 ऑब्जेक्टिव, no number of objectives, you keep 3 or 4 objectives, but they should be properly designed and time bound manner. Like first 6 months में, second 6 months में I will do this, next में I will do this. So is very important. Objectives should be very, very smart. Proper method is also important. आपकी जो method important है, that how you are going to work on research, how going to do your PhD in a proper time. For example, आपका methodology 6 साल ले रहा है, it will not make good sense. आपका methodology 6 महीने में खत्म हो रहा है, again it does not make good sense. So it should be properly designed as per the problem, that in 6 months I will do such kind of objectives. Ultimately, proper analysis of results is also compulsory. आपने काम किया कुछ है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायग्राम्स है, फिगर्स नहीं है, टेबुलर डेटा नहीं है, it will not make a good research. So initially these 4 points are very, very important. What? Problem selection, smart objectives, proper methodology, proper analysis. उसके बाद में आपकी गुड एथिक्स है. फॉर एग्जांपल हमारा एथिक्स क्या है? अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की डकैती डाल दिया, so these are not good ethics. But right now, what is my good ethics? I will go to the university, teach the students, help them to make their career, and I will take the salary from the university. This is good ethics. So it should be fair subject selection. First thing. Second, favorable risk benefit ratio. कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं, if we enroll in the PhD, हमारा कितना पैसा लगेगा, हमारा कितना टाइम लगेगा, इनिशियल क्या हमें कितना फायदा होगा. तो नो डाउट टुडे इज द रिस्क इन एवरीथिंग. हर जगह रिस्क है. सो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द चैलेंजेस. यू शुड हैव द कैपेसिटी टू फाइंड द चैलेंजेस इन योर सर्च. ऐसा नहीं है यू आर प्लानिंग कि मेरा पीएचडी हो जाएगा 3 साल में तो हो जाएगा. नो, पीएचडी इज नॉट इजी. यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, you will face a lot of problems, but ultimately it depends on you how you are going to take the risk and how you are thinking that you will get the benefit from your research. Third thing is independent review. आपकी PhD आप ही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा. Okay, so whatever you are thinking, you are planning, you are going to do in your research, it should not be depend on any other. For example, मेरा ये काम मेरा कोई फ्रेंड कर देगा, मेरा synopsis मेरा कोई फ्रेंड कर देगा, मेरा पीएचडी का काम मैं किसी और से करवा लूंगा. नो, नेवर डू दिस. योर रिसर्च इज ओनली योर रिसर्च. आपका काम आपको ही करना है. नो डाउट आपका गाइड में हेल्प करेगा, बट ऑल वर्क शुड बी इंडिपेंडेंट. यू हैव टू डू, यू हैव टू एंगेज ओनली एंड ओनली योर सेल्फ. एंड फोर्थ थिंग इज इन्फॉर्म कंसेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो फॉर द पीएचडी, यू विल बी अलर्टेड द गाइड. आप जो भी काम करेंगे उसकी कंसेंट से ही करेंगे. विदाउट कंसेंट of your supervisor you cannot do anything.
आपने काम कर लिया, गाइड को नहीं बताया, इट इज नॉट गुड एथिक्स। ठीक है, आपने कुछ भी किसी और से काम करवा लिया, गाइड को नहीं बताया, इट इज नॉट द गुड एथिक्स। So these are the 4 points which makes the good ethics: fair selection, good benefit ratio, independent review, and informed consent. अगर आपको कहीं से परमिशन भी लेना है किसी काम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक परमिशन, वी शुड टेक कंसर्न। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि वी आर गोइंग टू गिव यू द कंसर्न लेटर रिगार्डिंग दिस, तो विदाउट एनी कंसर्न यू कैन नॉट गो अहेड। तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको पता है? सिस्टमैटिक, द रिसर्च डेवलप इन ए सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। इट शुड, वी शुड यूज स्किलफुल मेथडोलॉजी, मटेरियल, अप्रोचेस, ऑर्डर, एंश्योर ऑफ द एंड फाइंडिंग। ओके, कहने का क्या मतलब हुआ? आपका जो मेथडोलॉजी है इट शुड बी वेरी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, रियलिस्टिक बेस पे होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, एकदम रिलायबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू रीड द पेपर, आपने क्या किया? यू हैव टेकन कॉपी पेड द मेथडोलॉजी ऑफ दैट ऑथर। ओके, इसने ऐसा ऐसा किया, मैं भी ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। नो, यू कैन नॉट डू। व्हाट यू कैन डू? You can use their protocol, your methodology, but ultimately you have to modify the protocol as per your need. You cannot copy and paste the protocol of any other else. Third thing, the methodology should be very, research should be very scientific. Scientific is very very important. We should use latest tools, techniques. लेटेस्टली क्या डेवलपमेंट हो रहा है आज के जमाने में, व्हाट वी आर यूजिंग, एआई, एमएल। Okay, remember, you can use AI and ML in your practical work, but never use AI and ML in writing the research paper and thesis. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप AI ML का यूज कर सकते हैं in your practical work, in your research, but you are not allowed to use the language of AI in ML in writing the paper as well as thesis. It means what? You have to write in your own language. अल्टीमेटली क्या बताया मैंने? सारा काम आपको खुद ही करना है, सिस्टमैटिक, मेथोलॉजिकल, साइंटिफिक, स्किलफुल एंड टारगेट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है आपने एक साल में 4 ऑब्जेक्टिव कर लिए, मुझे वो भी करना है, आई हैव टू डू दिस दिस दिस। नो, टॉपिक शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड मैनर। ऐसा नहीं आपका ऑब्जेक्टिव 5 साल में खत्म नहीं हो रहा, 6 साल में खत्म नहीं हो रहा, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड रिसर्च। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च? मैंने आपको बताया था, social value, scientific value, we should be very good in the social, we should be, first of all you should be a very good social human being। सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। उसके बाद you should be scientific, you should be independent, respect for the potential and your subject। आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स का रेस्पेक्ट करिए, कॉमर्स बैकग्राउंड, डू नॉट थिंक कि आने में सिर्फ डॉक्टर्स की वैल्यू है, इंजीनियर्स का वैल्यू है, फार्मेसी का वैल्यू है, आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, कॉमर्स का कोई, नो, एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल वैल्यू एंड इक्वल इंपॉर्टेंस। जो काम एक आईएएस कर सकता है वो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता है, जो काम एक डॉक्टर कर सकता है वो काम एक आईएएस नहीं कर सकता है। हमें अपना बैंक बैलेंस सही करवाना है, हमें अपनी आईटीआर भरवानी है, हम किसके पास जाएंगे? सीए के पास, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। इफ यू आर गेटिंग इल, वी आर गेटिंग फीवर, किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ और काम करना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम करना है, किसके पास जाएंगे? आईएएस आरएस के पास जाएंगे। इट मींस रिस्पेक्ट फॉर द पोटेंशियल एंड द सब्जेक्ट्स व्हिच इज अलॉटेड टू यू। एवरी सब्जेक्ट इज वेरी गुड एंड इट इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस। दुनिया में सब सब्जेक्ट्स की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स की वैल्यू है या साइंटिस्ट की वैल्यू है और किसी की वैल्यू नहीं है। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। अब सेकंड एक पॉइंट आता है रिसर्च एथिक्स। यहाँ पे आपको बहुत लीगल इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ लीगल इश्यूज इन द रिसर्च एथिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू क्या होता है? यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी एंड पेस्ट एनी डेटा, एनी राइटिंग वर्क इन एनीथिंग फ्रॉम एनी बुक और जर्नल। इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस, दिस कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्लेजरिज्म। वर्ड ऑफ प्लेजरिज्म आपने सुना होगा कि आपको कहीं से भी यू आर नॉट अलाउड टू डू कॉपी एंड पेस्ट, बिकॉज your paper, your thesis is getting checked by the software, and if you are found unethical, you are plagiarizing too much, आप टोटली पीएचडी से, रिसर्च से डिबार भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपका गाइड भी हो सकता है। इससे क्या होगा? योर इमेज विल बी डाउन, इमेज ऑफ गाइड विल बी डाउन,
image of university will be down. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप माइंड में चीज रखिए, whatever I will do, I will always follow the good research ethics. So the main focus is that the participants are protected. Okay, if a clinical data is required, you should take the ethical committee. If clinical data is not required, suppose if you are from the arts background, engineering background, proper use, systematic manner, doing your own practice is totally required. It works when and only when it is applied before the research is conducted. आपको ethics कब ध्यान रखना है? When you are going to enroll before your PhD. Keep in your mind that whatever I will do good. I will do good for the welfare of the society, and I will give some things new and scientific to the society. मैं इस सोसाइटी को कुछ नया दूंगा और साइंटिफिक चीज दूंगा. So this is your good research ethics. अब कई बार क्या होता है, what are the examples of the ethical issues in the research? कई बार प्रेशर भी होता है, गाइड भी बहुत डांटता है, गाइड फोर्स भी करता है जल्दी जल्दी काम करो. हमारे फैमिली वाले फोर्स करते हैं, क्या हुआ भाई PhD कंप्लीट नहीं हुई, फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हो गया भाई 5 साल हो गए 6 साल हो गए. इससे क्या होता है, वी आर फोर्स डूइंग द रॉन्ग प्रैक्टिस. So first of all, we should know what are the benefit of the good research and what are the harmful things of the bad research. So you are very vulnerable at this point. PhD के टाइम में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, चैलेंज ज्यादा होते हैं, lot of challenges are there, risk is high. Sometimes it's possible रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्सपेरिमेंट सही से सेट नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मॉडिफाई कर देंगे. So these things should not be followed during your search. And second thing, एक आपने पिक्चर देखा होगा 3 इडियट्स में, इसमें डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है. सो योर रिसर्च should be totally private and confidentially. It should only be shared between you and your supervisor. जब तक कि आपका PhD नहीं हो जाए, जब तक कि आपका कुछ बहुत रिसर्च सामने नहीं है, you are not allowed to disclose your research. You should keep research secret and very confident. In fact, आपको अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना है, दोस्त को भी नहीं बताना है कि मैं ये काम करने वाला हूँ. इसको मालूम होना चाहिए between you and your supervisor. So it is very important point that research is private and confident. कब तक? जब तक कि आपका PhD अवार्ड नहीं हो जाए, जब तक कि आपका रिसर्च is not known to society. Till that date, your research should be private and confident. Next point आ गया conflict of interest. ये भी एक मेजर इशू है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए लैब देयर आर 4 स्टूडेंट्स, आपस में लड़ाई कर लिया, एक दूसरे का कंप्लेन कर दिया, किसी का चीज चुरा लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, उससे क्या होगा, आपके इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे. सपोज गाइड से बहस हो गई, गाइड इज नॉट गुड, गाइड ने टॉर्चर कर दिया, आपने गाइड से मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, हमारे क्या आते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन ए लैब, आपके साथ अगर कोई और भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं आपकी लैब में, you should be have friendly nature. You should not have any conflict of interest. No doubt, आपकी लैब में 4 बच्चे हैं, चारों अपना काम करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे, but you should have proper manner, behavior, proper way of talking, and you should help each other. ऐसा नहीं है आपने उसके थप्पड़ मार दिया, उसकी चीज केमिकल खराब कर दिया, कुछ ग्लास फिर फोड़ दिया. फिर सेकंड थिंग क्या होता है, whenever you are going to publish your paper, उसमें भी एक कंसर्न होता है. You will ask your guide कि हमें अपने पेपर में किसका नाम देना है. आप किसका नाम देंगे, those who have helped you. Otherwise what will happen, if you have taken the help of somebody else, आपके लैब कलीग का आपने हेल्प लिया, पेपर में नाम नहीं दिया, what he will do, it will create a problem, it will create conflict of interest. तो ये भी एक बहुत सीरियस इशू है, इट्स अ काइंड ऑफ फाइट, लड़ाइयाँ भी हो जाती है. तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, you should not have any conflict between your PhD colleagues, between your PhD supervisor, between the university, and respect all in your life. Last thing, integrity and publication ethics. Integrity means, for example, don't take it otherwise. आपकी लैब में कोई SC/ST का है, कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है. You should not be caste based, you should not be religion based. All are equal in the research. SC/ST भी वही काम करेगा, आप भी वही काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भी वही काम करेगा. So we should have national integrity also in your research. We should not be have any kind of biasness. ये भी एक बहुत सीरियस इशू होता है. सपोज पता चला हमारे लैब में जनरल कैटेगरी के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, हम क्या सोचेंगे, अरे वो तो SC/ST का है तो हम लोग उनके साथ काम नहीं करेंगे. नो, डोंट हैव टू डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस. लास्ट मैंने क्या बोला, पब्लिकेशन एथिक्स.
पब्लिक एथिक्स क्या इंपॉर्टेंट होता है? डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम एनीवेयर एल्स, योर डेटा शुड बी नोबल, साइंटिफिकली अपडेट, नो कॉपी पेस्ट, नो प्लेजरिज्म। किसका नाम डालना है आपको? जिन्होंने आपका पेपर में हेल्प किया है, योर गाइड, योर लैब कलीग्स, इफ योर फ्रेंड, इन दैट यू कैन ऐड द नेम। तो इट इज कॉल्ड एज गुड पब्लिकेशन एथिक्स। ये पब्लिकेशन गलत कब हो जाएगा? व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस। सपोज गाइड का नाम नहीं दिया, फ्रेंड्स ने काम कराया, फ्रेंड्स का नाम नहीं दिया, ठीक है, पैसे देके करा लिया पेपर, जल्दी करा लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, सो दीज आर द wrong practices. So these are very important points: benefit, informed consent, fairness, privacy, confidentiality, no conflict of interest, integrity, and publication ethics. These are the most of the important part of the ethical issues in the research. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? रिसर्च मिसकंडक्ट। एक बहुत सीरियस इशू है, इसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? व्हाट इज फैब्रिकेशन? व्हाट इज फैब्रिकेशन? मेकिंग ऑफ डेटा और रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग देम। आपका डेटा आया दूसरा, आपने लिख दिया दूसरा। व्हाट यू हैव डन? मैनिपुलेशन इन द डेटा। इट इज नॉट अलाउड, नेवर नेवर अलाउड। अगर आपका रीडिंग में 2.3 आ रहा है तो 2.3 आपको डालना है, 2.3 का 10.3 नहीं होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेशन, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज व्हाट? falsification. It is what? Manipulating research material, equipment, methodology, text, figure, process और omitting data और results। आपने क्या किया? कुछ मैनिपुलेट कर दिया, कुछ मेटेरियल में मैनिपुलेट कर दिया बिना किसी कंसर्न के, डेटा में मैनिपुलेट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी का रॉन्ग डेटा ले लिया या डेटा दिया ही नहीं, रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिया। इट इज कॉल्ड एज falsification. And last, most important, plagiarism. It is the use of another person's ideas, process, words, results without giving appropriate credit. आप synopsis बनाएंगे, उसका reference. Whenever you are going to make your synopsis or thesis, what we are going to write? Reference. That we have written this based on the reference of this. So you can change. You have to change the language. And no doubt you can give the reference. आप उसका पेपर यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर मॉडिफिकेशन प्लस यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट पेपर कि हमने इस साइंटिस्ट का, इस पेपर का ये रेफरेंस हमने हमारी रिसर्च में ऐड किया है। तो FFP, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म, दीज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द रिसर्च। इससे क्या होगा? डिस्ट्रिक्शन ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड रिसर्च रिकॉर्ड्स। आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, your guide name will be bad impression, your university will be bad impression, and you are totally banned from doing another kind of research in your life. आप लाइफ में कभी भी कहीं पे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इनिशियली हमको लगता है कि ये सब ज्ञान की बात है, ऐसी लेक्चर की बात है, बट रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेल्फ। यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्ड्स है। अब देखिए मिसकंडक्ट कैसे होता है? falsification, fabrication, plagiarism, ghost writing. Ghost writing means if you are writing the introduction in about 50 pages, it will not make sense. You are writing review 100 pages, it will not allow. So it should be very summarized. आपका एक क्या लिमिट होना चाहिए कि in that page I will complete my data which is totally scientific and accurate. And next point is bare assertions. Do not use any irrelevant examples. इम्प्रॉपर ऑथरशिप, मैंने आपको बताया इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑथरशिप, फॉर एग्जांपल आपने काम किया, आपकी गाइड के अंडर में काम किया, फर्स्ट ऑथर कौन रहेगा? आप खुद रहेंगे। को ऑथर कौन रहेंगे? आपके कलीग्स रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर कौन रहेगा? आपका गाइड रहेगा। इफ यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ समवन एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द नेम इन दैट पेपर, इट इज कॉल्ड एज मिसकंडक्ट। बिब्लियोमेट्रिक इन्फ्लेशन। बिब्लियोमेट्रिक का मतलब आपने रेफरेंस लिया, रेफरेंस है 2010 का, what you have done, you have changed the year. You are not allowed to change in reference. वो reference जिस साल publish हुआ है वही रहेगा। We cannot change the name of authors in that, cannot change the name of journal, cannot change the year of publication of that paper. So in reference, no modification is allowed. Last में मैंने क्या बोला? Violation of ethical standards regarding human and animal experiment. For example, आपने अगर कोई फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड का है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का भी है, तो हम लोग एनिमल्स पे कुछ काम करते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक
द परमिशन फ्रॉम द एथिकल कमिटी। इंडिया के अंदर कमिटी बनी हुई है कि ओनली आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू, सपोज मैंने कोई ड्रग बनाया, कोविड वैक्सीन आया था, सबने वैक्सीन लगवाया, इनिशियली वी कैन नॉट ट्राई अवर ड्रग ऑन ह्यूमन बींग। हम हमारी कोई भी दवा ह्यूमन बींग्स पे नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया पे देना पड़ेगा, देन हमें चूहे पे काम करना पड़ेगा, फिर हमें बंदर पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें गवर्नमेंट से वी हैव टू टेक परमिशन, देन ओनली वी कैन टेस्ट our drug on the human beings. It means we have to follow all ethical guidelines before doing the research on human and animal experiments. So these are the forms of misconducts. अब देखिए next point is very important. How to maintain research ethics and avoid scientific misconduct. इसमें कुछ important point है. Whenever you start, before conduct of the research, what you have to do? Develop clear plan. Submit proper methodology. Well communicate with the research community. For example, if you are going any conference, आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे पूरे इंडिया लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, तो ऐसा नहीं है कॉन्फ्रेंस में गए, सर्टिफिकेट लिया, खाना खा के आ गए, नो, आपका वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सो दैट यू शुड नो कि आपके फील्ड के अंदर लेटेस्ट वर्ल्ड में क्या काम हो रहा है. सो यू शुड बी वेरी कम्युनिकेटिव. मैंने आपको क्या बोला, डू नॉट शेयर योर डेटा शुड बी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंट, बट you can communicate about your research ki I am working on this, what kind of things on which you are working, what kind of research is going on in the society, what kind of research is going in India and abroad. Second thing, during your research, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हैं, बिफोर एंटरिंग ऑन द पीएचडी, ड्यूरिंग पीएचडी, आफ्टर पीएचडी. ये आपके पॉइंट्स कब है? फर्स्ट वाला मैंने क्या बताया, बिफोर एंटरिंग इनटू द पीएचडी. सेकंड पॉइंट, व्हेन यू एंगेज योरसेल्फ इन द रिसर्च, फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल, always take the consent before going any conference, before writing the paper, before doing any permission of any someone, before using the library, before using the internet. कहीं भी आप किसी और काम के लिए जाते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई डेटा के लिए, टेक देयर परमिशन, प्रोटेक्ट योर टीम, रेगुलरली चेक योर डेटा. आपका जो रिसर्च वर्क है, हर वीक के वीकेंड पे हमें 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 गाइड से ही डिस्कस करना चाहिए. इन द लास्ट वीक वी हैव डन दिस वर्क, लास्ट वीक वी हैव डन दिस वर्क. इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद योर गाइड ने बोला काम कर लो, आपका 1 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, इट इज नॉट गुड साइंटिफिक रिसर्च. इट शुड बी प्रॉपर्ली टाइम मैनेज ऑल्सो. लास्ट में मैंने क्या लिखा है, आफ्टर रिसर्च. आपका तो पीएचडी हो गया, नाउ यू आर गुड साइंटिस्ट, अब आप अपना स्टडी को शेयर करिए कि मैंने ये काम किया है, सो दैट आपको उसको रिटर्न मिलेगा. यू विल गेन द पॉपुलैरिटी, यू विल गेन द इमेज, यू विल गेन द रिटर्न. देन यू पब्लिश योर डेटा. आप जब पेपर अपना पब्लिश करेंगे, उसको पूरा वर्ल्ड भी देख पाएगा, पूरा वर्ल्ड भी पढ़ पाएगा, उनको मालूम चलेगा दैट यू हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क. सो दैट ऑलवेज यूज रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ये आगे की बात है, कैसे करते हैं हम लोग आगे काम. तो 3 चीज है, बिफोर रिसर्च, ड्यूरिंग रिसर्च एंड दी आफ्टर रिसर्च. आपकी रिसर्च के बाद में सब कुछ कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. आपको पेपर पब्लिश करना है, आपको अपना इमेज भी गेन करना है, आपको लोगों को बताना है मैंने ये काम किया है. तो दीज थिंग्स शुड बी कीप इन माइंड. अब नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, व्हाट इज पब्लिकेशन. अभी आपने सुना होगा एयरप्लेन क्रैश अहमदाबाद में, उसका न्यूज आया पेपर में. कैसा है न्यूज, वहां पे रिपोर्टर गए, डेटा लिया, फोटोग्राफ लिया, न्यूज़पेपर में छाप दिया. सेम स्टोरी इन द रिसर्च पेपर. व्हाट इज यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द टाइटल ऑफ योर पेपर. उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, मेटेरियल मेथड लिखना है, रिजल्ट लिखना है, आपको अपनी फाइंडिंग्स बतानी है, आपको लास्ट में आपको बताना आपने क्या काम किया है. यू हैव टू ऐड डिस्कशन एंड रेफरेंस इन द रिसर्च पेपर. रिमेंबर, आपको 5 कंपोनेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ योर पेपर, उसके बाद कौन कौन आपके ऑथर्स हैं, उसके बाद आपका एफिलिएशन. फॉर एग्जांपल आपने पेपर तो लिख दिया, ऑथर्स के नाम भी डाल दिए, पर आपने तो लिखा ही नहीं वो कहाँ के ऑथर है, कौन सी यूनिवर्सिटी के ऑथर है, इट नॉट मेक सेंस. उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ता है, शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट, इट इज समरी ऑफ योर रिसर्च वर्क. आपने एक पैराग्राफ में क्या बता दिया कि मैंने ये काम किया है. उससे क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर पेपर, द एडिटर एंड रिव्यूअर विल गेट टू नो दैट ओके यू हैव डन दिस वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है, टाइटल फॉलोड बाय द नेम ऑफ ऑथर्स, उसके बाद एफिलिएशन, देन एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में फिर आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आपने क्या काम किया है, क्या क्या चीज उसमें डाला है. उसके बाद में आपको मटेरियल्स एंड मेथड, आपने कैसे कैसे काम किया है, व्हाट प्रोटोकॉल यू हैव फॉलोड. उसके बाद में आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. डिस्कशन के अंदर क्या होता है, व्हाट इज योर फाइंडिंग्स,
और बाकी लोगों ने जो दुनिया में काम किया है, अदर पीपल, व्हाट इज देयर फाइंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया, सेम काम वो एक साइंटिस्ट अमेरिका में कर रहा है, रिजल्ट सेम आएगा? नो डाउट वी आर वर्किंग ऑन द सेम पैरामीटर, सेम प्रोटोकॉल, रिजल्ट कभी सेम नहीं आएगा, बिकॉज क्लाइमेट का फर्क है, केमिकल्स का फर्क है, कंडीशंस का फर्क है, माइंड सेट का फर्क है। तो डिस्कशन में क्या होता है, यू हैव टू कंपेयर योर स्टडीज। किससे कंपेयर करना है? जब पहले से ही आपके काम पे हो रखी है, विच इज बीइंग ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन योर वर्क, तो इट इज कॉल्ड ए डिस्कशन। तो डिस्कशन शुड बी इन अ कंपेरेटिव एंड साइंटिफिक मैनर। लास्ट में आपको क्या आ जाएगा? रेफरेंस। आपने कौन कौन से रेफरेंस काम में लिए, ये सब किसके पार्ट है? अ गुड रिसर्च पेपर के पार्ट है। अब रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या बताया आपको? टाइटल, नेम ऑफ ऑथर्स, देयर एफिलिएशन, देयर एब्स्ट्रैक्ट, their introduction, IMR, introduction, material method, result, IMRD, D for discussion, and again R. अब ऐसे याद करिए, IMRDR, I for introduction, M for material method, R for result, D for discussion, and again R for referencing. इतना जब आपका होगा, जब भी एक आपका अच्छा पेपर अगर होगा, then it will be accepted in a very good journal. So आपको पेपर बनाने से पहले आपने बहुत सारे पेपर सर्च भी किए होंगे, यू हैव सर्च लॉट ऑफ पेपर्स, यू हैव रेड लॉट ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे लोगों ने पेपर लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे क्या लिखा है। जब भी आप सीखते हैं, देन मेक्स अ गुड रिसर्च पेपर। अब देखिए, ए साइंटिफिक पब्लिकेशन इज ए टीम एफर्ट। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? ऑथर, आप खड़े हुए हैं। आपने पेपर किसको सबमिट किया? जनरल को। जनरल आपका पेपर ऐसे नहीं छापेगा, इट विल नॉट पब्लिश। वो किसको भेजेगा? एक एडिटर को। एडिटर किसको भेजेगा? रिव्यूअर को। रिव्यूअर कैन डू थ्री थिंग्स। अगर रिव्यूअर को आपका पेपर पसंद नहीं आया, ही कैन रिजेक्ट, फिर आपको कोई और पब्लिश करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आपका पेपर एक बार में पसंद आ गया, ही विल रिकमेंड फॉर द पब्लिकेशन। थर्ड थिंग, इफ उसको लगता है कि देयर इज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट पेपर, what it will tell you, okay, make the revision in the paper, again submit in the journal, then your paper is accepted. So these are four important part of a publication. ऑथर कौन है? आप खुद ऑथर है। सेकंड, आपने कहाँ भेजा? जर्नल के पास भेजा, मालूम भेजने के लिए, छपने के लिए। जर्नल ने कहाँ भेजा? एडिटर को। एडिटर ने कहाँ भेजा? रिव्यूअर को। सब कुछ ओके है, आपका पेपर कहाँ गया? पब्लिकेशन के अंदर गया। तो ए गुड जर्नल नॉर्मली टेक्स अबाउट 2 to 6 months। बट मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला? अगर आप पैसे देके पेपर करवा, लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज डोंट माइंड, इफ यू आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर पेपर, और अगर वो आपका पेपर विद इन 2 days या विद इन वीक करके दे रहा है, आप नोट डाउन कर, आप लिख के ले लीजिए, दैट जर्नल इज अ फेक जर्नल, और वो आगे जाके स्कोपस या वेब ऑफ साइंस से बाहर हो जाएगा। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, ओके पेजेस बनी, सेंड योर पेपर, विल पब्लिश इन 2-3 days। डोंट गो फॉर दैट। आपको कभी भी ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए पीएचडी के टाइम पे कि मुझे एंड में जाके 2 दिन के अंदर 4 पेपर करने हैं। ऑलवेज फॉलो गुड प्रैक्टिस, राइट गुड पेपर, सेलेक्ट गुड जर्नल्स रिगार्डिंग योर फील्ड, एंड गिव टाइम टू गेट द पब्लिक। ऐसा नहीं हो सकता आप एक साल में 50 पेपर कर देंगे। अगर कोई कर रहा है तो टोटली फर्जी है। एक साल में आप कितने पेपर कर पाएंगे प्रैक्टिकली? 3 to 4। बट व्हाट यू कैन डू, पब्लिकेशन आप जब कर पाएंगे जब आपके पास डेटा होगा। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर नहीं भी कर पाते हैं, यू कैन राइट द बुक चैप्टर, you can write the review article. So there are 3 kind of publications: book chapter, review article, and research paper. You can write all these 3 things. Research paper तो कब होगा? जब डेटा होगा। बट इन केस अभी आपके पास अगर डेटा नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ गुड बुक चैप्टर इन अ गुड रिव्यू आर्टिकल इन अ जर्नल। So these are 4 important parts: author, journal, publication, and review. Now results. अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? रीजंस फॉर मोर मिसकंडक्ट एंड अनएथिकल बिहेवियर। जैसे मुझे 2 दिन में लखपति बनाए, मैंने क्या बोला? आई हैव टू टेक 2 crore rupees इन 2 nights। व्हाट आई विल डू, या तो मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, या मैं कहीं पे डकैती डाल दूंगा। ऑब्वियसली बात है, सैलरी लेके तो मैं करोड़पति बन नहीं पाऊंगा 1 साल के अंदर, isn't it? Because these are the main important points that makes you unethical behavior। पहला पॉइंट क्या है? आपके पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट रिसर्च, पब्लिकेशन का कोई एथिक्स नहीं है, आपके जरूरत से ज्यादा कोलैबोरेशन हो गए, आपने 50 जगह से दोस्ती यारी कर ली, इफ यू आर मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कोलैबोरेटर्स, इंक्रीजिंग प्रेशर, आपका गाइड आपको फॉलो कर प्रेशर कर रहा है, नहीं मुझे तो 4 दिन में पेपर पब्लिश करके दो,
योर फैमिली मेंबर्स आर क्रिएटिंग प्रेशर, ओके 2 दिन में पेपर करके दो, इससे भी क्या होगा, आप गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल इंडस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी, कोई आपको बोलेगा मुझे तो 20,000 रुपये दे दे, मैं तेरा नाम पेपर में डाल दूंगा, so this is also unethical practice. So these are 4 major reasons: lack of knowledge, listen carefully; large collaboration, आप collaborate करो, no doubt करो, but not beyond any limit. थर्ड, इंक्रीजिंग प्रेशर, आपका आपका दोस्त प्रेशर कर रहा है, आपको यूनिवर्सिटी आपको प्रेशर कर रही है, गाइड प्रेशर कर रहा है गलत काम करने के लिए, आपसे कोई पैसे ले रहा है या आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो दीज 4 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएथिकल बिहेवियर. सो व्हाट इज माय सजेशन? डोंट फॉलो इन एनी ऑफ दिस थिंग्स. अब यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया है, एक साइंटिस्ट एटॉल, एटॉल का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं. व्हाट ही टोल्ड, he said that academic publishing depends on trust. विश्वास पे सारा काम चलता है. ट्रस्ट किसका है? आपका है. योर सुपरवाइजर का आप पे है, आपका अपने सुपरवाइजर पे है. ट्रस्ट ऑन योर फैमिली ऑन यू. ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स ऑन यू. ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, मनी गया दोबारा आ सकता है, ट्रस्ट एक बार गया फिर नेवर कम. सो साइंटिस्ट आर जनरली परसीव्ड एज वेल इंटेंट सीकर्स ऑफ ट्रूथ. Universities, learning and as a producer of knowledge. तो being a scientist, आपको क्या होना चाहिए? आपको अपना ट्रुथफुल होना चाहिए, इमेज वाला होना चाहिए, आपको नॉलेजफुल होना चाहिए, so that you can help to the health and welfare of the society. अब यहाँ पे 2 एजेंसी के नाम हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, और एक मैंने क्या लिखा है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, WAME, ICMJE एंड कोप, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स. दे आर द गाइडिंग कम्युनिटीज. वो आपको बताएंगी कि आपको पेपर पब्लिश करना है तो कैसे कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग टू सबमिट योर पेपर इन अ जर्नल, वहां पर लिखा हुआ होता है ऑथर गाइडलाइन. ऑथर गाइडलाइन का मीन्स इन व्हाट फॉन्ट, हाउ मेनी वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इन द पिक्चर, टेबल, टेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू. So first of all, what you have to do, read the author guidelines before sending your paper. Otherwise, what will happen? आपका वो जर्नल एक्सेप्ट नहीं करेगा पेपर, जबकि इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो. ठीक है. तो दीज आर द 4 मेन एजेंसीज, वेम, ICMJE, कोप. दीज आर द मेन कमिटीज ऑन पब्लिकेशन एथिक्स. वो आपको बताएंगे दीज आर द गाइडिंग फोर्स टू इंटरप्रेट एथिकल पब्लिकेशंस एप्रोप्रिएटली. ओके. सो मेन थिंग इज, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए? We should be very good scientists, truthful, knowledgeable, skillful. Avoid what? Fabrication, falsification, plagiarism. Always follow good moral practice. Always follow good ethics. We should not follow unbelievable ethics. अब देखिए एक लास्ट पॉइंट आता है, Why do publication ethics matter? हमारा ethics क्यों मैटर करता है? क्योंकि सपोज आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ, आगे जाके 1 साल बाद, आफ्टर 1 year or 2 year, योर पेपर इज गोइंग टू रीड बाय समबडी एल्स. आपने आज किसी का पेपर पढ़ा है, कल को आपका पेपर पढ़ेगा. व्हेन आई वाज डूइंग PhD, मैंने बहुत सारे लोगों के पेपर पढ़े, आज बहुत सारे लोग मेरे भी पेपर पढ़ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ माय एथिक्स. तो अगर आपका एथिक्स स्टार्टिंग से ही अच्छा है तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे. यू विल गेन अटेंशन, यू विल गेन लाइमलाइट, आपका अच्छा आइडिया बनेगा, आपके पेपर को अटेंशन मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी. और लास्ट में क्या लिखा है? Honest scientific reports build trust among peers scientific community. Honesty and trustfully are the very main important points in research. We should not be greedy. आजकल एक प्रोग्राम आता है CID, अगर आपने देखा हो तो बहुत लोगों ने, बड़ा कौन प्रोग्राम है. उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर जहर लगा दिया. ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सटर्नल बता रहा हूँ. उसने उसका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में बेच दिया. जब लोग मर गए, उसको जब अरेस्ट किया, उससे लोगों ने पूछा कि आप इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, आपने ऐसा काम क्यों किया? उसने क्या बोला? टू गेन द पब्लिसिटी. उसको मिली क्या पब्लिसिटी? नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? उसने क्या किया? ही इज गिविंग पॉइजन ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द पब्लिक. नो डाउट ही वाज गुड साइंटिस्ट, उसने बहुत अच्छी रिसर्च भी करी है, नोवेल्टी भी करी है, लेकिन उसकी रिसर्च सोसाइटी के काम आई क्या? सो ही वाज नॉट द गुड साइंटिस्ट. हाँ, वो कोई ऐसी दवाई बनाता, इफ ही मेक्स अ गुड मेडिसिन, जिससे कि वो पेटेंट भी होता, लोगों को फायदा भी मिलता, देन ही विल गेट द पब्लिसिटी एंड अटेंशन. अच्छा साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, आपको नाम के लिए, पैसे के लिए साइंटिस्ट नहीं बनना है. यू हैव टू मेक गुड रिसर्चर फॉर एंड ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी.
आपको ये एक मेन एम होना चाहिए. ओके, सो प्रिवेंटिंग अबाउट साइटेशन, whatever you are writing, whatever papers you are reading, read carefully. ठीक है, और कम से कम ऐसा नहीं बहुत ज्यादा 500 पेपर पढ़ रहे हैं, 1000 पेपर पढ़ रहे हैं. जस्ट गो फॉर द लिमिटिंग साइटेशन. हर चीज टाइम बाउंड और लिमिट में होना चाहिए. घोस्ट राइटिंग होना चाहिए, आपको बताया. एवरीथिंग बियॉन्ड द लिमिट इज हार्मफुल. ओके, अवॉइड अदर सिलेक्शन बेसिस. मैंने आपको बताया वी शुड बी इंटीग्रल. यू ऑल आर इंडियंस, वी शुड हैव प्रॉपर इंटीग्रिटी. तो वी शुड अवॉइड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन. हमें नहीं होना चाहिए. कल्चर के बेस पे नहीं होना चाहिए. कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. हम पहले कुछ अच्छा इंसान तो बने, उसके बाद हम आगे काम कर पाएंगे. ये मैंने आपको इसलिए बताइए कि दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च. आप में आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप एक गुड ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो एवरीथिंग इज फेल. So these are very important parameters before entering in your research field. रीड एंड पब्लिकेशन. आपको ऐसे पेपर्स को नहीं पढ़ने जो किसी लोकल जर्नल के हो. अवॉइड रीडिंग द डेटा और पेपर ऑफ दैट जर्नल्स विच आर टेकिंग मनी एंड पब्लिशिंग द पेपर इन 2-3 days. That journals are called as wasteful publication. Don't waste your papers in going to publish of that journal. अपने पेपर को प्लीज ऐसे आप वेस्ट मत करिए. ऐसे जर्नल्स को फॉलो मत करिए. डोंट फॉलो redundant publication. Always follow good publishers, good impact factor journals, so that it can make good influence on you. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, सलामी पब्लिकेशन. हम सलामी देते हैं, सलामी. इट मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग टू फॉलो. आप कम चीज करिए, पर ऐसा काम करिए कि लोग आपको सलाम करें, लोग आपके पेपर को सलाम करें. आपको लोग कब सलाम करेंगे? व्हेन यू आर गुड रिसर्चर, गुड ह्यूमन बीइंग, एंड यू आर डूइंग गुड फॉर द हेल्प ऑफ द सोसाइटी. जब आपका रिस्पेक्ट होगा. मनी से कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होता है. रिस्पेक्ट किससे होता है? आपके एथिक्स से, इंटीग्रेट है. ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया. डिस्प्यूट, एथिकल, जो भी आपने लैब कलीग्स की हेल्प ली है, अगर आपने उनको हेल्प लिया तो उनका नाम दीजिए. डू नॉट मिसबिहेव विद योर लैब कलीग्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पीएचडी सुपरवाइजर, योर यूनिवर्सिटी. एवरी ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट, आपको सबको रिस्पेक्ट करके चलना है. लिसन, पीएचडी इज ए वेरी टफ जर्नी, इट्स नॉट सो इजी, बट आपको एक चैलेंजिंग टास्क के अंदर खुद को पूरा मेंटेन करके चलना है. टोटली depends on you, because you are totally independent. Nobody will help you. So it should not have any disputes. We should be very cooperative. We should not have any conflict of interest. Respect everyone in your research. अब देखिए, लास्ट में एक फोटो दिखाई आप पे. न्यूटन है, सबको पता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट. ये खाली समय में बैठा हुआ है, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इसने क्या किया? एक एप्पल आके गिरा, इसने आइडिया लगा लिया. क्या आइडिया लगाया? कि एप्पल ऊपर से नीचे कैसे गिर गया. अब ये कब सोचा इसने? जब होल वर्ल्ड वाज अंडर द प्लेग. तो एक बीमारी आई थी, प्लेग, वर्ल्ड खत्म कर दिया था. नोबडी वाज हैविंग जॉब. न्यूटन भी खाली था. ही वेंट इन द गार्डन एंड वाज सिटिंग ऑन द चेयर. इसने क्या देखा? एप्पल ऊपर से आके गिरी. वहीं से उसने आइडिया लगाया कि देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज ग्रेविटी. तो बैठे बैठे उसको आइडिया मिल गया. इट मींस आइडिया कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर एल्स, बट इट शुड बी रिलेवेंट इन साइंटिफिक. नो डाउट कंडीशंस कई बार वर्स्ट भी हो जाती है. कोविड आया, वी ऑल फेस कोविड. रिसर्च भी खराब हुआ, घर पे भी बैठे, लोगों का जॉब भी गया, रिसर्च भी नहीं हुआ, बट वी हैव फेस अ चैलेंज. उसको निकाल के हमने क्या किया? हमने वैक्सीन लगवाई. वैक्सीन क्या है? काइंड ऑफ रिसर्च ही तो है. लोगों ने उसको क्या रिसर्च किया, अच्छा वैक्सीन बनवाया, लोगों की जिंदगी बनाई. सो दे आर कॉल्ड एज क्रिएटर्स. So all this was about the today's topic. सिंपल था. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है या कोई any query है किसी का. Hello. Thank you, sir. Thank you for your detailed presentation about the topic. And and I hope that participants must have got a lot of information from today's session. So we have got some questions from the participants and also appreciation from the participants. They are saying that it was a good lecture. Thank you, So ma'am. Any presentations question? are like that. Can we use AI or ChatGPT for correcting the grammatical or spelling mistakes in a research paper? No, ma'am. It is not allowed in the paper. You don't have to use any AI and ML tool. You can use
in creating the picture, diagram and practical work, not in writing the paper and thesis. आजकल हर जगह लिखा हुआ होता है, आप इस जनरल को फॉलो करेंगे, do not use the language of AI tool in the paper. So in the paper it is not allowed strictly. पेपर में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. Okay, sir. Another question is we have got from one participant, and she's saying that I'm from geology background, but my research is in fisheries, and I am publishing my research paper in aquaculture journal. Will it affect my CV negatively or not? First of all, you should know about the journal कि वो किसके अंदर लिस्टिंग है. You should know the listing of the journal. If it is taking money and it's get published within 10 to 15 days, don't go for the journal. Check if it is listed in the Scopus or Web of Science, it is of good quality, then only, no doubt, you can get the delay in the publication of paper. But check the accuracy of the journal, whether it is listed in Scopus or Web of Science or not. Do not trust any journal blindly. So first of all, get complete knowledge, then go for the paper. It is my suggestion to all the participants. Always inquiry everything before selecting the journal. It is very, very important. Otherwise, it can damage your paper. Okay, participants, if you have any more question, you can just write it that in chat box. And another question which we have got is somebody is asking that it is a ethical concern if a supervisor withhold some part of research scholar work for personal use and is intentionally excluded from the thesis, what action can be taken against in this case against the supervisor? See, if supervisor is using your data and excluded from your thesis, if he or she is using, first of all, you should complain to the, if Indian, there is a committee called as UGC, University Grant Commission. All kind of grievance related to the research work. Initially, discuss with supervisor, any action, discuss with your HOD, not taking any action, discuss with your registrar, with your vice chancellor. If any of the persons from the university is not taking any action, you are allowed to go to the University Grant Commission and you can complain directly to them that your supervisor is using such things for the personal use and not included in this. You can go and complain to the UGC. They will take the necessary action. But you do not go directly to UGC. First of all, discuss with your supervisor, then HOD, then registrar, then VC, and then to the UGC. ऐसा केस बहुत होता है, ऐसा होता भी है. So this is the proper channel. You can complain to them, but not directly. Follow the proper channel. Okay, sir. And Okay. another question is we got that if we accept invitation of being editor or reviewer of a journal which is not ranked under Web of Science, does it cause any harm to my career or does it impact my CV negatively or not? Yes, definitely don't accept their invitation letter because their journal will totally out in a few days. So it will not make your report good. Do not accept any acceptance as a reviewer or editor of false or their journal which are taking a lot of money. It will not improve your CV. It will spoil your CV. Totally. Don't, what I told, आपको कभी भी greedy नहीं होना है, लालची नहीं होना है. Okay, go आपको, they will give you honey, sweets, chocolate, come, eat me and die. है ना, फ्लावर, एक सुंदर फ्लावर था, उसके अंदर हमने क्या किया, वो डाल दी, दवाई डाल दी, सुंदर तितली आई, तितली फ्लावर पे आके मर गई. क्या मतलब, वो आपको अच्छी चीजें हमसे अट्रैक्ट करेगी. ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज समटाइम्स हार्मफुल. So never do such kind of things. They will harm you. Yes, sir. Sir, other question is it necessary to publish your paper in Scopus and Web of Science if it is peer reviewed also? So we can go for publishing in such journals. Yes. You can, suppose, see, there are three categories: Scopus, Web of Science, and SCI, Science Citation Index. If any journal is not listed in Scopus or Web of Science, but it should be listed in the SCI. It should be peer-reviewed scientific index journal. Then you can go for that paper. ऐसा नहीं कि सारे जर्नल्स स्कोपस के अंदर है और वेब ऑफ साइंस, कुछ स्कोपस के अंदर भी है, कुछ वेब ऑफ साइंस के अंदर भी है, कुछ एससीआई के अंदर भी है. इट इज कॉल्ड एज साइंस साइटेशन इंडेक्स. तो आप जब जर्नल का होम पेज पे जाएंगे वहां क्लियर लिखा हुआ रहता है इंडेक्सिंग ऑफ द जर्नल. ठीक है, लेकिन लिसन वन मोर थिंग, कभी भी डू नॉट ब्लाइंडफुली ट्रस्ट ऑन द होम पेज ऑफ द जर्नल. तो ये जर्नल आजकल बहुत सारे क्लोन जर्नल भी है, दे आर मेकिंग फॉल्स वेबसाइट and they are writing that we are in the list of Scopus.
So go, when we will go come tomorrow, I will show you how to authenticate whether the journal is in scope or not. कल हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें मालूम चलेगा कि वो जर्नल स्कोप उसके अंदर है कि नहीं है. ओके, टुमारो विल डू गुड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दैट. जी सर। सर हमने पहले जो क्वेश्चन लिया था, जो पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि शी इज फ्रॉम जोलॉजी और जो रिसर्च वर्क है वो हम्म. एक्वाकल्चर में कर रहे हैं, तो शी इज हम्म. सेइंग जिस जिस पेपर में मतलब जिस जर्नल में वो पेपर भेज रही हैं जो एक्वाकल्चर का है वो हम्म. रेप्यूटेड जर्नल है, फिशरीज पे वो काम कर रही हैं, तो वो उसमें भेज हम्म. सकती हैं या नहीं। नहीं, उनको ये आप उनसे उनको ये बोलेगा कि हाउ शी नो कि इज इट रेपुटेड और नॉट. आस्क हर टू सर्च इन लिस्ट ऑफ स्कोपस इन वेब ऑफ साइंस. अगर वहाँ पे लिस्टिंग है देन इट इज रिलेवेंट, अदरवाइज इज नॉट रिलेवेंट. ये सर मैंने वही उनको बोला कि एक तो आपका जो आपने काम किया है वो जर्नल के स्कोप में होना चाहिए, दूसरा जर्नल आपका लिस्टेड होना चाहिए, प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड होना चाहिए वेब से। टुमारो आई विल डू प्रैक्टिकली टू फाइंड आउट हाउ टू Yes, फाइंड yes. योर जनरल. Participants tomorrow also, sir will be there with us. So tomorrow you can all ask your questions also. Sir कल कुछ practically भी दिखाएंगे तो उससे आपको ज्यादा better understanding हो यस जाएगी. यस यस एग्जैक्टली. Yes. So thank you, sir. And वो the participant is saying that journal is listed in Web of Science, so she knows that it is a well-reputed journal. हाँ, if it is listed then she can go ahead, no issue, Yes, sir. but no plagiarism. हाँ, एक्चुअली हर क्वेश्चन इज आई थिंक वो ये कहना चाहती हैं कि उनका सब्जेक्ट जोलॉजी है बट वो रिसर्च फिशरीज पे कर रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो काम है वो रिलेटेड होना चाहिए जर्नल के स्कोप से। बाकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जी सर, बाकी आपका सब्जेक्ट क्या है वो उस पॉइंट पे मैटर नहीं करता। तो आप अगर रिसर्च वर्क आपका शुड बी इन द फ्रेम ऑफ द जनरल, जी उसके सर, अगर आपका क्राइटेरिया में वो काम काम आना जर्नल चाहिए. से रिलेटेड है और जर्नल लिस्टेड है देन यू कैन गो अहेड। यस 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 Yes, एग्जैक्टली. sir. Yes, sir. So thank you, sir, for today's session, and I hope we are done with sessions, with question answer session for today. And it was indeed थैंक a यू very मैम. wonderful lecture. Participants has asked a lot of question, and you थैंक answered यू. all of them. So it is so nice of you, and we'll again थैंक यू meet मैम. tomorrow at श्योर 6 श्योर. p.m. And yes, Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me such opportunity. And Ji, it was sir. very wonderful to discuss some students. And yes, sir, tomorrow I will we have. Definitely. discuss about patents and I will show them some practical exercise. Yes, sir. Yes, sir. We have wonderful, wonderful audience. They listen very attentively and ask very relevant questions. So we are so grateful for them, so for being so attentive and asking a lot of questions, so that and keep asking question. We just motivate them that keep asking questions and get your queries solved. So thank you, sir, for this So informative session. thank you, And ma'am. Thank you very much. Thank yes, sir. you. And dear participants, on the behalf of Vital Biotech and the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota, Rabindranath Tagore University Bhopal and Guru Gorakhnath Ji Government College Hisar and the entire organizing committee, I convey my heartfelt gratitude to the speaker, Dr. Manas sir, Thank you. and Thank to you the very much. Thank you. participants for being a part of this FDP and for your gracious attention and enthusiasm throughout. So thank you all. We will meet tomorrow again and have a great evening. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Have a nice day.